आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पूरा चैप्टर जो है वो सेंटेंसेस वाइज ट्रांसलेशन के साथ पैराग्राफ टू पैराग्राफ में आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसको पूरे चैप्टर्स को जो है वो आप बताएं, लेकिन मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको उसकी ट्रांसलेशन बताऊंगा। चैप्टर नंबर 2 है Birkenhead Drill. The Birkenhead Drill was a true ship. In February 1851, more than 150 years ago, it was carrying soldiers and their families to South Africa. There were 630 people on the ship. Of these, 170 were women and children. The soldiers were mostly young, inexperienced men, most of whom had joined the army only recently. The officers were few. For the most part, they too were young and inexperienced. Birkenhead, अब मैं इसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूं आपको। बर्केनहेड एक जहाज था। फरवरी 1851 में 150 साल पहले ये फौजियों और उनके अहले खाना को जनूबी अफ्रीका ले जा रहा था। जहाज पर 630 अफराद सवार थे। इनमें से 170 यानी 170 खवातीन और बच्चे थे। ये फौजी ज्यादातर जवान ना तजुर्बेकार आदमी थे, जिन में से बेशतर हाल ही में फौज में शामिल हुए थे। अफसरान कम थे, ज्यादातर हिस्से के लिए वो भी जवान और ना तजुर्बेकार लोग थे। अब नेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो रहे 64 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन इन साउथ अफ्रीका there was a rock in the sea, which was then unknown and undiscovered. It was not shown in any of the map of the sea. It lay hidden under the surface of the sea, as if it were a wild creature of the ocean, laying in wait for its prey. The unfortunate prey was fast approaching it, all unconscious of its fate. It was the troop-ship Birkenhead. Whatever it was thinking of at the moment, it had no idea that it was fated so suffer early destruction. अब इसका है ट्रांसलेशन। जनूबी अफ्रीका के केप टाउन से 64 किलोमीटर दूर समंदर में एक चट्टान थी, जिसे उस वक्त नामालूम थी और ना ही उसको दरियाफ्त किया गया था। इसे ऐसे किसी भी समुद्री नक्शे में उसे नहीं दिखाया गया था। यह समंदर की सतह के नीचे पोशीदा थी, छुपी हुई थी, जिसे ये समंदर की कोई जंगली मखलूक हो, जो अपने शिकार की तलाश में हो। बदकिस्मत शिकार तेजी से इसके करीब आ रहा था। सब इसकी किस्मत से बेखबर हो गए थे। ये फौजी दस्ता था। उस वक्त जो भी इसके बारे में सोच रहा था, इसे अंदाजा ही नहीं था कि जल्द ही तबाही उनका मुकद्दर बन जाएगी। Next, it was 25th February at 2 o'clock in the early morning. The Birkenhead was nearing Cape Town. She was almost at the end of the uneventful voyage. The sea was calm as if sound asleep. Suddenly, there was a crash. The ship
had struck the hidden rock. 10 minutes later, the ship struck the rock again and was split into two. ये 25 फरवरी था, सुबह सवेरे 2 बजे। बर्केनहेड केप टाउन के करीब था। वो तकरीबन नाशाइस्ता सफर के इख्तिताम पर थे। समंदर पुरसकून था, गोया सोया हुआ हो। अचानक हादसा हो गया। जहाज छुपी हुई चट्टान से टकरा गया। 10 मिनट बाद जहाज ने चट्टान को एक बार फिर वो चट्टान से टकराया और उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। Meanwhile, the people on the ship were awakened from the peaceful sleep by the shock. They came out from their cabin and tried to make their way to the deck. But wherever they went, they found the ship damaged. They crawled among the wrecked pieces of the unfortunate ship and at last reached the deck. Very few knew what had happened, but they all knew that it was something terrible. When the ship split into two, the front half soon sank into the water and disappeared. But fortunately, all the people on the ship managed to reach the remaining half of the split ship, which was still floating on the water. They had a narrow escape from the watery grave. Whatever awaited them in the immediate future, for the time being, they were safe. इसी दौरान ट्रांसलेशन है नेक्स्ट पैराग्राफ की। इसी दौरान जहाज पर मौजूद अफराद जो है वो पुरसकून और पुरअमन नींद से बेदार हो गए। वो अपने केबिन से बाहर आए और डेक तक जाने की कोशिश की, लेकिन जब भी उनके जहाज को नुकसान पहुंचा, वो बदकिस्मत जहाज के तबाहकुन टुकड़ों के दरमियान तैर गए और आखिरकार डेक तक पहुंच गए। बहुत कम लोगों को यह मालूम था कि क्या हुआ है, लेकिन इन सबको मालूम था कि यह सब कुछ खौफनाक है। जब जहाज 2 हिस्सों में तकसीम हो गया तो अगला निस्फ हिस्सा जल्दी पानी में डूब गया और गायब हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से जहाज में मौजूद तमाम अफराद इस तकसीम शुदा जहाज के बाकी आधे हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जो अभी भी पानी में तैरता हुआ था। इन्हें पानीदार कब्र से मुख्तसर सा रास्ता फरार हासिल हुआ, जो कि मुस्तकबिल करीब में उनका मुंतज़िर था। वक्ती तौर पर वो सलामत थे, यानी बचे हुए थे। अब नेक्स्ट, when the ship struck against the rock, most of the lifeboats were damaged or destroyed. Only 3 of these boats were in a useful condition. जब जहाज चट्टान के करीब आया तो जिंदगी बचाने वाली लाइफ बोट्स थी, वो बेशतर जो है वो खराब या तबाह हाल हो गई थी। उनमें से सिर्फ 3 किश्तियां जो हैं वो कारामद थी, यानी लाइफ बोट्स। अब नेक्स्ट, 630 people to be saved. As against that, there were only 3 lifeboats, each of which could carry only 60 passengers. Only 180 would find room in these 3 boats. The wrecked ship could not last much longer. Any passenger who could not find a place in one of the lifeboats faced certain death by drowning and worse.
For the seas around were alive with sharks, whose cruel, frightful jaws awaited the unfortunate ones who fell into the waves. The cruel enemy was to be seen wherever the eyes was turned. There was a very little chance for anyone who found himself in these dangerous water. अब 630 अफराद महफूज थे। इसके बरखिलाफ 3 लाइफ बोट्स थी, जिनमें से हर एक में सिर्फ 60 मुसाफिर सवार हो सकते थे, 60। इन तीनों किश्तियों में सिर्फ 180 की गुंजाइश मिल सकती थी। वो टूटा हुआ जहाज ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। कोई भी मुसाफिर जो लाइफ बोट्स में से किसी एक में भी जगह नहीं ढूंढ सकता था, उसे डूबने और बदतर मौत का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि समंदर के आसपास बहुत सी शार्क थी, जिनके खौफनाक जबड़े उन बदबख्तों का इंतजार कर रहे थे जो लहरों में गिरे थे। जहां भी नजरें जाती थी, हर तरफ जालिम दुश्मन ही नजर आते थे। इस खतरनाक पानी से बचकर जाने के मौके किसी के लिए बहुत ही ज्यादा कम थे। $630 people on the wrecked ship and room in the lifeboats for only 180. One would have expected a panic, for life is sweet, men and women struggling for their lives, all struggling to get into one of the lifeboats, would surely have caused a panic. In the resulting confusion, men, women, and children might have been crushed underfoot. They might have pushed one another into the sea in their wild effort to make their way to the boat. The boat might have been overloaded and sunk under the weight. Such things had happened before. Whoever was the strongest had won his way to the boats. The weakest, women and children, the old and the sick, had often been left to their fate. If such a thing had happened on the Birkenhead, not one out of 630 people would have been saved. But there was no panic on the Birkenhead. Some confusion there was bound to be. Out with the boats and let us away. Someone may have cried, whoever it was who had cried thus. It was not one of the young soldiers. There was a perfect discipline and great heroism among the troops. तबाहशुदा जहाज में 630 अफराद और लाइफ बोट्स में सिर्फ 180 की जगह बाकी रह गई थी, 180 की। हर शख्स तकलीफ में था। लाइफ यानी जिंदगी सबको प्यारी होती है। अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करने वाले मर्द और खवातीन तमाम लाइफ बोट्स में से किसी एक में भी दाखिल होने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। यकीनन जिंदगी बचाने के लिए भागदौड़ की वजह से पाँव में कुचले गए हों, या फिर किश्तियों तक जाने के लिए उन्होंने वसी कोशिशों में से एक दूसरे को समंदर में धकेल दिया हो। किश्तियों को ज्यादा बोझ और वजन की वजह से वो भी डूब सकती थी।
ऐसा पहले भी हो चुका था। जो भी ताकतवर था किश्तियों तक जाने में कामयाब हो गया। सबसे कमजोर खवातीन और बच्चे, बूढ़े और बीमार अपनी किस्मत की वजह से रह जाते। अगर बर्केनहेड पर ऐसा होता तो 630 अफराद में से एक भी ना बच पाता। लेकिन बर्केनहेड पर कोई खौफो हिरास नहीं था। कुछ उलझनों का होना लाजमी था। अफरा तफरी की हालत थोड़ी बहुत थी, लेकिन ऐसी अफरा तफरी में सिपाही बिल्कुल शामिल ना थे। जहां दस्तों में मुकम्मल तौर पर नज़्म ज़ब्त था और बहादुरी थी, फौजी दस्ते मुकम्मल तौर पर नज़्म ज़ब्त के साथ अपनी जगह पर खड़े थे। Women and children, next paragraph, women and children first was the order of the day. The commander of the troops called on his men to together on deck in proper drill order. Line upon line of red-coated soldiers with set faces stood in their ranks, calmly awaiting their fate. Meanwhile, the lifeboats had been lowered. When all the women and children had filled the boats, there would be room for only a few others. The men stood still and watched as the women and children were placed in the boats. As the boats sailed away, they saw the red line of uniformed soldiers standing at attention. As if they were at their daily drill. The ship's company, with their captain, stood by the soldiers and went down with them as the wrecked ship sank into the water. सबसे पहला हुक्म ये था कि औरतों और बच्चों को भेजा जाए। फौजियों के कमांडर ने अपने जवानों से मुतालबा किया कि वो ड्रिल पर मुनासिब मश्क के लिए इकट्ठे हो जाएं। सुर्ख चेहरे वाले फौजी जो कतारों में किनारे किनारे खड़े खामोशी से अपनी सफों में खड़े अपने मुकद्दर के मुंतजिर थे। इसी असना में लाइफ बोट्स को नीचे कर दिया गया था। जब तमाम खवातीन और बच्चे कश्तियों में भर गए तो वहां सिर्फ चंद अफराद की गुंजाइश होगी। मर्दों, औरतों और बच्चों को किश्ती में बैठा हुए देख रहे थे। जब किश्ती चल रही थी तो उन्होंने वर्दी वाले फौजियों को सुर्ख लकीरों की तरह इस तरह खड़े देखा जैसे वो अपनी रोजमर्रा की मश्क पर खड़े हैं। जहाज की कंपनी के अफराद और कप्तान अपने फौजियों के शाना बशाना खड़े थे। जहाज के पानी में डूबते ही उनके साथ नीचे चले गए, मतलब पानी में वो भी डूब गए। A few of these struggled to the surface of the sea and held on the piece of the wreckage until a rescue ship arrived on the scene and picked them up. But 460 men went down forever. Everyone was loyal to himself and to his duty. इनमें से, अब इसकी ट्रांसलेशन है, इनमें से कुछ आखिरी सांसों तक जद्दोजहद कर रहे थे और उन दो टुकड़ों पर बैठे रहे थे यहाँ तक कि एक रेस्क्यू जहाज जाए वकुआ पर पहुंच जाए और उन्हें उठा लिया। लेकिन 436 यानी 436 अफराद हमेशा के लिए पानी में डूब गए। हर एक अपने और अपने फर्ज के साथ बहुत ज्यादा वफादार था। The commander of the troops was hanging on the some wreckage
When he saw two young sailors struggling in the water, he pushed the wreckage toward them, and all three held to it. Then the commander realized that if he hung on with the boys, the wreckage were not strong enough to support all three. So he let go his hold and sank into the sea. फौजियों का कमांडर कुछ मलबे पर सहारा लिए बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि दोनों कप्तान पानी में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, तो उसने मलबे का टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ा दिया और तीनों उसका सहारा लेकर पानी में तैरते रहे। तब कमांडर को एहसास हो गया था कि अगर हम तीनों इसका सहारा लेकर चलते रहे तो ये टुकड़ा ज्यादा देर तक नहीं तैर सकेगा। इसने अपने आप को समंदर की लहरों के हवाले कर दिया, यानी वो जो कमांडर था उसने, और उस लकड़ी के टुकड़े से अलग हो गया। The one officer of the troops who was rescued reported, the determination of all hands was far more than I thought could be affected by the best discipline. Everyone did as direct. There was not a murmur among them. Orders were carried out as if the men were getting on the ship instead of going to the bottom. फौजियों में से एक अफसर जिसने जो बारियाफ्त करा लिया गया था, उसने इतला दी, यानी जो बच गया था। तमाम हाथों का अज़म इससे कहीं ज्यादा था जिसके बारे में मैंने सोचा था कि इस जब्त से असरअंदाज हो सकते हैं। सब ने हिदायत के मुताबिक नज़्म व ज़ब्त का मुशाहिरा किया। इनमें से कोई गुनगुनाहट भी नहीं थी। ऑर्डर इस तरह किए गए जैसे सिपाही जहाज पर नीचे जाने की बजाय जहाज पर सवार होने जा रहे हों। अब लास्ट पैराग्राफ है, Birkenhead Drill. Women and children first is the order followed on all ships that are in danger. Birkenhead Drill means today to stand and to be still, facing certain death so that weaker one may have a chance of life. Birkenhead ये ऑर्डर था, इसका मतलब था औरतें और बच्चे पहले। वो हुक्म था जो उस खतरनाक वक्त में उस किश्ती में दिया गया था। बर्कनहेड का मतलब है खड़े रहो और खामोशी से, मतलब खामोशी से खड़े रहो। किसी खास मौत का सामना करना पड़ता है, यानी उस वक्त खामोशी से खड़े रहो चाहे मौत का सामना करना पड़े, ताकि कमजोर अफराद को जिंदगी का मौका मिल सके, यानी जीने का मौका मिल सके। आज मैंने आपको इसका ट्रांसलेशन पैराग्राफ टू पैराग्राफ, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह ही अब चैप्टर्स को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंग्लिश, जैसे कि रिक्वेस्ट रही थी सबकी, आपको मेरे चैनल पे इसी तरह ट्रांसलेशन के साथ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।